Assalamu alaikum. This is Sayyid Jamal Shah with JS Learning Solutions. Today, the topic which I have chosen for you that might be difficult for some of these students. Okay, while solving the question of active and passive voice, when we are asked to change a sentence from active to passive voice, at that time sometimes a confusion occurs in the verb of transitive or intransitive. So it becomes difficult for some of these students to identify whether the verb is transitive or intransitive. Okay, so let us have the detail about the transitive or intransitive verbs. Okay, I will try my level best to make it easy for all of you. What is the difference between transitive and intransitive verb? Okay, the transitive verb, the transitive verb requires a direct object to complete its meanings. As far as intransitive verb has indirect object in it to complete its meaning. Now, for example, if I say he plays cricket in the ground, he plays cricket in the ground. So cricket is a direct object here, and in the ground is an indirect object here. Okay. So when in this sentence we find both of the objects, direct object and indirect object, but some of the grammarians, they say they don't call in the ground as indirect object. Okay, they say in the ground is prepositional phrase, or they call it adverbial. Okay, but they call cricket is an object. Okay, so he plays cricket in the ground. Cricket is, if we say cricket is direct object and in the ground is indirect object, then it is fine. Okay. We can call it direct object or indirect object, or we can say cricket is an object, but in the ground is a prepositional phrase. But it concerns us little whether whatever we call them, it is not our concern. Okay. Now, for making passive voice, we need direct object or object. Okay, but if in any sentence where there is an indirect object or prepositional phrase, the passive voice of those structures is not possible. Okay, we cannot make the passive voice of those type of sentences. Now let us have a look that how will we identify, how to identify whether the verb is transitive or intransitive. It might be difficult for some of the students. Now we have got two types of phrases here. What do you, and another is whom do you. What do you and whom do you. We have to identify whether the verb is transitive or intransitive. We have to take the first form of verb and place it here one after another in both of the phrases. For example, if there is a verb play, what do you play? It is giving us a sense. So it means that play is transitive verb. What do you eat means tum kya khate ho. What do you eat? It is also giving us a sense. Okay, so it means that eat is also transitive verb. So we can change them from active to passive voice. Active to passive voice is possible for eat and for play. Now let us have some of the examples of intransitive verbs. For example, what do you go? In Urdu we say tum kya jate ho. It is not giving us a sense. Tum kya jate ho. So what do you go is not giving us a sense. And further we have to place it here as well. Whom do you go? It is also not giving us a sense. In Urdu we can say tum kisko jate ho. So kisko jate ho, tum kya jate ho. So go is not giving us a sense on both of the phrases. Okay, for intransitive verb it is necessary that the verb should not give us the sense on both of the sentences. Okay, so one by one we will have to check. Okay, now we have come to the point that go is an intransitive verb. Go is the example of intransitive verb. Let us have another example. For example, if I say swim, what do you swim?
It is not giving us a sense. What do you swim? तुम क्या तैरते हो? Whom do you swim? तुम किसको तैरते हो? It is not giving us a sense. So we will write here, swim is also an example of intransitive verb. Okay? What do you arrive? It is not giving us a sense. Whom do you arrive? It is also not giving us a sense. So it means that arrive is also intransitive verb. Similarly, we have walk, okay, and some other intransitive verbs. Walk and stand, reach, stand, come. Okay, so these all are the examples of intransitive verb. Now these all are intransitive verbs, okay, and whenever we find these intransitive verbs, okay, these intransitive verbs may contain indirect object in the sentence. For example, if I say we go to school, so to school is an adverbial, or it is a prepositional phrase. In swim, we will not find the direct object. She is swimming in the pool. Now, in the pool is an indirect object. It may not contain the direct object, okay? It will not contain the direct object. Arrive. I arrived at the station. At the station is also a prepositional phrase. It is also not giving us a sense. So, walk. So, these all, intransitive verbs, they are not giving us a sense. And they all contain indirect object. That is the reason that we cannot make the passive voice of these type of sentences. Now the question arises here, in the new model paper of first year English class, Karachi Board, there are two types of sentences. Okay, so let us have a description of those sentences as well. They took the word run into different sentences and they asked us that whether run is transitive or intransitive. Okay, so run can either be a transitive verb or an intransitive verb. Okay, if the word run is being used as for the running, or if it is giving us a sense of running, okay, means भागने का अगर सेंस आ रहा है तो रन जो है ये intransitive verb है. लेकिन अगर but if the run is giving us a sense of running any organization, किसी organization को run करना, किसी factory को run करना, उस sense में अगर आ रहा है, in that sense the run is transitive verb. Okay, now let us have an example. For example, if I say he is running very fast. Now very fast is adverbial. It is not very fast is not a direct object, or it is not an object. Okay, so he is running very fast. So that is the reason that here in this sentence the run is intransitive verb. यहाँ पर ये जो run है ये intransitive verb है. He is running very fast, वो बहुत तेज भाग रहा है. इसकी passive voice नहीं बनेगी. The passive voice of this structure is not possible. But for example, if I say वो एक फैक्ट्री चलाता है, he runs a factory, वो एक फैक्ट्री चलाता है. अब इसकी जो intransitive इसके अंदर जो runs the factory जो है, the factory is direct object. फैक्ट्री इसके अंदर direct object है, तो इसकी passive voice possible है. यहां पर फैक्ट्री चलाने के लिए जो इसकी जो मीनिंग आ रही है रन की, वो ये आ रही है कि वो क्या चलाता है, वो फैक्ट्री चलाता है. तो यहां पर ये जो सेंस बन रहा है, इसमें फैक्ट्री जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंटेन कर रहा है. फैक्ट्री डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसमें. सो द फैक्ट्री इज रन बाय हिम. फैक्ट्री उसके थ्रू चलाई जाती है. द फैक्ट्री इज रन बाय हिम. ओके, तो यहां पर ये जो फैक्ट्री है ये हमें सेंस दे रहा है ट्रांजिटिव वर्ब का. ठीक है जी. नाउ व्हाट डू यू रन, अगर भागना है तुम क्या भागते हो, व्हाट डू यू रन. ओके, एंड whom do you run, तुम किसको भागते हो. सो रन भागने के सेंस में इट इज नॉट गिविंग अस अ सेंस. तो रन भागने के सेंस में अगर आ रहा है तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है. और अगर किसी फैक्ट्री को चलाने के सेंस में आ रहा है तो उसको हम कैसे देखेंगे, व्हाट डू यू रन, तुम क्या चलाते हो, मैं फैक्ट्री चलाता हूं. सो यहां पर ये सेंस दे रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है.
तो ये मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन बना था आप लोगों का कि रन जो है वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव है, और रन को दो डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज किया था, ठीक है, ट्रांजिटिव में भी और इंट्रांजिटिव में भी। एक सेंटेंस जो है वो भागने के सेंस में था और दूसरा फैक्ट्री रन करने के सेंस में था। तो एक जगह पर वो ट्रांजिटिव था, दूसरी जगह इंट्रांजिटिव था। आई होप कि ये आप लोगों की समझ में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब अच्छी तरह से आ गए होंगे। और अब अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि कोई भी वो वर्ब आपको देते हैं सेंटेंस के फॉर्म में और वो आपसे कहते हैं कि बताइए ये रन ट्रांजिटिव है या ये वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, तो आप उसको इन दो फ्रेजेस पर रखेंगे। ओके, जैसे जो मैंने एग्जांपल दी आपको मेक की, या मैंने ईट की एग्जांपल दी, व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो, सेंस बन रहा है तो इसका मतलब ट्रांजिटिव है। और व्हाट डू यू अराइव, तुम क्या पहुंचते हो, नहीं बन रहा। whom do you arrive, तुम किसको पहुंचते हो, नहीं बन रहा, तो इसका मतलब है कि ये अराइव जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। दोनों पर अगर सेंस ना आए तो वो इंट्रांजिटिव है, और अगर किसी एक पर भी सेंस आ जाए तो वो ट्रांजिटिव है। आई होप कि मैंने इसको बहुत आसान करके आपको बताया है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। थोड़ा सा टॉपिक डिफिकल्ट है। वीडियो मेरी 2-3 बार अगर आप देखेंगे, स्टार्टिंग में जब मैं इसको डिफाइन कर रहा था तो उस वक्त थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेट हो गया था। मैं उसको दोबारा से रिव्यू दे देता हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंटेन करते हैं, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता। और पैसिव वॉइस के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, ठीक है। कुछ ग्रामेरियन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं कहते, बल्कि वो उसको एडवर्बियल कहते हैं या प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं, ठीक है। तो और वो ये कहते हैं कि पैसिव वॉइस के लिए ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। और जितने भी इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, ये कोई मेरे सामने 40-50 के करीब हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, दे आर सो मैनी, कि बहुत सारे हैं। और ये जितने भी इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं इनकी पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होती। आई होप कि ये आपकी समझ में लेक्चर आ गया होगा। थैंक्स अ लॉट, टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।